हेलो गाइस। आज हम जानने वाले हैं क्लास सेकेंड के कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि चैप्टर सेकेंड जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे हमने समरी लिया हुआ है। एज वी नो दैट द कंप्यूटर हैज़ अ 4 मेन पार्ट्स। मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश करूँगी। ओके। जैसा कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर है वो उसको ज़्यादातर 4 मेन पार्ट्स में ही बांटा गया है। पहला यहाँ पे जो जैसा आपको दिख रहा होगा, पहला है मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा आपका एंड द थर्ड इज़ आपका कीबोर्ड एंड फोर्थ इज़ माउस। ऑल दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड बाय वायर्स। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट्स वन बाय वन। तो हम कंप्यूटर के इन सारे पार्ट्स को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका मॉनिटर। मॉनिटर इज लाइक अ टेलीविज़न या फिर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। जो हमारा मॉनिटर होता है एक टेलीविज़न की तरह दिखता है। अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर है उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वीडीयू। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। CPU. The full form of CPU is the Central Processing Unit. And it is inside the CPU cabinet. And it is also called the brain of computer. Here the third part of the computer is keyboard. A standard keyboard has 104 keys. We know that uh, the standard keyboard has 104 keys. And the fourth part of the computer is mouse. We know that we tell this device mouse because it looks like a mouse, so we tell this device a mouse. A mouse has two buttons and a scroll wheel, left button and right button and scroll wheel. And the another parts of the computer are also here given. The fifth part of the computer is printer. That is not a main part of the computer, but it is also called a part of computer. Printer. We know that a printer is also used to print a copy of the information started in a computer. We use the printer for copying the paste or on the page. Okay. And the sixth part of the computer is speaker. We know that and we use at home speaker to listen music, sounds and many things and भजन वगैरह सुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. The speakers are used to listen music and sounds. स्पीकर का यूज़ हम म्यूज़िक और साउंड्स को सुनने के लिए करते हैं. We know that. Headphones and microphones. The seventh part of the computer is headphones and microphones. Here the given figure is headphone, microphone and many things. And the eighth part of the computer is UPS. UPS stand for uninterrupted power supply. जैसा कि हम घर में इन्वर्टर का यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे UPS का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में. After the light was cut in, UPS stand for the full form of UPS is uninterrupted power supply, and UPS stands for uninterrupted power supply as UPS keeps a computer running for a short time after a power cut. Okay, here are some questions are given. Let us start the questions. Here first question is given. Which devices are used to store and transfer data?
नेम एनी थ्री ऑफ देम। ऐसे कौन से डिवाइसेस है जो जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखने और ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि CD, DVD एंड पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एनी 4 parts of a computer. Here at the starting in this chapter we read that there are 4 main parts. The first is monitor, second is CPU, third is keyboard and fourth is mouse. Okay, and the third question is which computer parts help you to listen to sounds. ऐसे कौन से कंप्यूटर की पार्ट्स हैं जो कि आपको साउंड्स को या फिर म्यूज़िक को सुनने में हेल्प करते हैं। वी नो दैट इज़ स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक। ओके, हियर आर three questions are given. I think you have cleared all the questions. If you have any doubt in any questions, please comment me in the comment box. Okay, next, take the correct answer. A monitor is also known as, हम मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? आपको पता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट 20 सेकेंड। ओके, एंड द सेकेंड टेक द क्वेश्चन इज अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट कॉल्ड। जो कीबोर्ड है उस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, उस बटन्स को हम किस नाम से जानते हैं? कीज़ के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के किस पार्ट को हम ब्रेन के नाम से जानते हैं? वी नो डैट CPU is the brain of computer. Next, 4, a pen drive is also called a, पेन ड्राइव को हम और किस नाम से जानते हैं? फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। Here some questions are given. The first questions in the fill in the blanks is dash is present inside a cabinet. Here the right answer from the option is CPU. CPU is present inside the cabinet. Next, second, dash stands for uninterrupted power supply. We know that and we remember that at the first previous parts of this is UPS, and the second is UPS, and the third dash has 2 buttons and a scroll wheel. ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके पास 2 बटन्स और एक स्क्रॉल व्हील है? वी नो दैट इज माउस। And the fourth question is our standard dash has 104 keys. We know that the last option is a standard keyboard has 104 keys. Okay guys, this chapter second summary is completed. Okay, I think you understand all these, and if you have any questions or you don't understand, please comment me on the comment box. Okay, thank you guys. Radhe Radhe.